and she is working as a DIMBA consultant from last 3+ years. So over to you, ma'am. Yes, good evening, all of you. Myself, Dr. Monica More. I'm one of the founder of Majizo GNM Nursing Institute. So basically, आज जे पण इथे स्टुडंट उपस्थित आहे, सो त्यांना थोडंसं आम्हाला आमच्या इन्स्टिट्यूट बद्दलच्या काही गोष्टी इंट्रोड्यूस करून द्याव्याशा वाटतायत इथे, की जसं की आम्ही मागच्या ही काय आमच्यासाठी नवीन गोष्ट नाहीये, की आम्ही मेडिकल फील्डमध्ये आत्ता आलोय आणि आत्ता काम करतोय. मागच्या एक आम्ही 8 ते 9 वर्षापासून मेडिकल इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो. सो नर्सिंग विद्यार्थ्यांचा किंवा नर्सिंग स्टाफचा आम्ही खूप जवळून एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे. सो इन्स्टिट्यूट चालू करण्याचा मागचा हा जो आमचा उद्देश आहे, हा जो पर्पज आहे, तो सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत आम्हाला पोहोचवायचा आहे. जसं की हे इन्स्टिट्यूट चालू करण्याचं एकमेव कारण म्हणजे की जे बाहेर आपण इंडस्ट्रीमध्ये बघतो, की भरपूर सारे जीएनएम झालेले स्टुडंट्स आहेत, एएनएम झालेले स्टुडंट्स आहेत. तर विद्यार्थ्यांचा फक्त थेरॉटिकल पार्ट कंप्लीट न करता आपण त्यांना चांगल्यातल्या चांगल्या प्रकारे क्लिनिकल एक्सपोजर कसा देऊ शकतो, विद्यार्थ्यांचा ॲज अर्ली ॲज अर्निंग कसं चालू करता येईल, शिवाय विद्यार्थी लवकरात लवकर सेल्फ डिपेंडंट कसे होतील, याच्यावरती आमचा फोकस आहे. आम्ही खूप छान असा प्लॅन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बनवला आहे. सो सर्व विद्यार्थ्यांनी याचा बेनिफिट घ्यावा. आणि जसं की आपल्या सगळ्यांनाच माहिती की नर्सिंग असो या मेडिकल कुठलंही प्रोफेशन असो, हे खूप नोबल प्रोफेशन आहे. सो ते आपल्याला त्या लेव्हलला घेऊन जायचं, हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते. सो त्याप्रमाणेच आपण एक रोबस्ट सिस्टीम बनवलेली आहे. सो विद्यार्थ्यांचा थेरॉटिकल पार्ट तर आपण कंप्लीट करणारच आहोत इन्स्टिट्यूटमध्ये. पण अलोंग विथ आपण त्यांना अजून कुठल्या गोष्टी ॲडिशनल देऊ शकतो. जसं की आपल्याला चॅलेंजेस काय येतात? विद्यार्थी दशेत आपण जेव्हा असतो, तेव्हा बेसिक विद्यार्थ्यांना अडचणी कुठल्या येतात? सो जेव्हा आपण हॉस्पिटलमध्ये पेशंट सोबत डिस्कस करत असतो किंवा जेव्हा तुम्ही विद्यार्थी केअर करत असतात पेशंटची, तर बेसिकली कधी-कधी लँग्वेज इश्यू असू शकतो, थोडंसं कम्युनिकेशन स्किल इश्यू असू शकतो. सो त्या ठिकाणी आपण ह्या पण गोष्टी आपण व्हॅल्यू म्हणून त्यांच्या आयुष्यात ॲड करणार आहोत, की आपण कसं आपलं स्वतःचा कॉन्फिडन्स वाढवू शकतो. सेल्फ कॉन्फिडन्स ज्याला म्हणतो किंवा सेल्फ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जी असते, ती खूप महत्त्वाची असते आपल्या प्रोफेशनमध्ये. सो बाकी आपण जसं म्हणायला गेलं तर कम्युनिकेशन स्किल झालं, लँग्वेज जशी झाली, की आपण मराठी, इंग्लिश, हिंदी ह्या लँग्वेजेसमध्ये पण ॲटलीस्ट बेसिक कम्युनिकेशन आपल्याला आपल्या पेशंट सोबत करता आलं पाहिजे. सो अशा भरपूर सगळ्या गोष्टी आहेत, जे की आम्हाला आमच्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे सगळं द्यायचं आहे. सो हा आमचा बेसिक पर्पज आहे. सो फक्त डिग्री नावाला घ्यायची आहे आणि विद्यार्थ्यांना 3 वर्षाचा जीएनएम कोर्स कंप्लीट झालाय, असं सर्टिफिकेट फक्त आम्हाला विद्यार्थ्यांना न देता, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण अभ्यास कसा होईल आणि ते लवकरात लवकर त्यांचं अर्निंग कसं चालू करतील, हा आमचा बेसिक फोकस आहे. सो आपण खूप सिंहगड रोड, जसं आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे आपल्या कॉलेजचं लोकेशन धायरी आहे आणि सिंहगड रोडला जेवढी पण काही चांगली हॉस्पिटल्स आहेत, सगळ्या हॉस्पिटल सोबत आपण खूप चांगल्या पद्धतीचं कोलॅबोरेशन आणि टाय अप झालेलं आहे. सो आमचा पर्पज आणि आमचा प्लॅन असा असेल, की फर्स्ट इयर पासूनच विद्यार्थ्यांना चांगल्या लेव्हलचं क्लिनिकल एक्सपोजर मिळायला पाहिजे. जेव्हा ते 3 वर्षानंतर ह्या कॉलेजमधनं बाहेर पडतील, तर त्यांना परत त्याच्यासाठी त्यांची वेगळा वेळ किंवा त्यांची परत वेगळी वर्ष वाया घालू नये किंवा वेगळा वेळ देण्याची गरज येऊ नये विद्यार्थ्यांना, की आता माझं 3 वर्षामध्ये जीएनएम कंप्लीट झालंय आणि परत आता मला 2 वर्ष जाऊन कुठेतरी अनुभव घ्यावा लागेल आणि त्याच्यानंतर माझं अर्निंग चालू होईल. सो असं नाहीये. तुम्हाला पहिल्या वर्षापासूनच चांगला क्लिनिकल एक्सपोजर मिळेल. तुम्ही तुमचं लवकर अर्निंग चालू कराल, लवकर सेल्फ डिपेंडंट व्हाल आणि जेव्हा तुम्ही 3 वर्षानंतर कॉलेजच्या बाहेर पडाल, सो तुम्ही एक चांगल्या हायेस्ट लेव्हलवरती तुमचं पेमेंट चालू व्हावं. हा आमचा बेसिक पर्पज आहे. आणि आपल्या सगळ्याच मेडिकलमधल्या लोकांना माहिती आहे, की नर्सिंग स्टाफची किंवा मेडिकल प्रोफेशनमधल्या लोकांची आउट ऑफ म्हणजे बाहेर किती व्हॅल्यू आहे आणि किती मागणी आहे या सगळ्या लोकांना. सो आपण त्या विद्यार्थ्यांना, जी लोकं विद्यार्थी इंटरेस्टेड आहेत किंवा त्यांचा प्लॅन आहे किंवा त्यांचा एक गोल आहे, की बाबा मला माझं नर्सिंग कंप्लीट झाल्यावर मला आउट ऑफ जायचंय, मला तिथे पण एक चांगली सर्व्हिस द्यायची आहे किंवा तिथे जाऊन मला एक जॉब करायचा आहे. तर अशा विद्यार्थ्यांना पण आपण एक्सटर्नल लँग्वेज जी म्हणतो, फॉरेन लँग्वेज आहे, ते पण आपण याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना ॲड करतोय. म्हणजे एकदा आपल्या कॉलेजमधून जर विद्यार्थी बाहेर पडला, तर कुठल्याही गोष्टीमध्ये तो अडकला जाणार नाही. सर्वांगीण विकास करूनच आपण त्या विद्यार्थ्यांना
विद्यार्थ्यांना बाहेर पाठवणार आहोत. हाच आपला बेसिक पर्पज आहे. कारण आम्ही भरपूर कॉलेजेसचा अभ्यास केलेला आहे, की विद्यार्थी दशेमध्ये त्यांना काय अडचणी येतात किंवा कुठल्या गोष्टींना त्यांना सामोरे जावं लागतं, हे आम्ही स्वतः अनुभवलेलं आहे. म्हणून हा आम्ही चांगला एक बेसिक पर्पज याच्या मागे ठेवून, उद्देश ठेवून आम्ही हे इन्स्टिट्यूट चालू केलेलं आहे. सो खरोखर जे विद्यार्थी ऑलरेडी आपल्या सोबत जॉईंट आहेत, त्या विद्यार्थ्यांचं खरोखर मनापासून स्वागत आहे आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये. आणि नक्कीच तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाची अजून एक गोष्ट ऍड करायची म्हटली तर आपली जी डॉक्टरांची टीम आहे, जवळजवळ 10 ते 11 डॉक्टरांची टीम आहे आपली. त्याच्यामध्ये तुम्हाला डॉक्टरांकडनं पण खूप चांगला एक्सपोजर मिळणार आहे. सो नक्कीच जे विद्यार्थी अजून पण GNM ऍडमिशनसाठी सर्च करतायत, त्यांनी नक्कीच आपल्या माझीजाऊ GNM नर्सिंग इन्स्टिट्यूटचा विचार करावा. धन्यवाद. थँक्यू. ओव्हर टू दिशन. Yes. So thank you so much, Monica ma'am. Now I would like to introduce Bhushan Yande sir. So he is completed B Pharmacy from Modern College of Pharmacy. He is done Master of Health Administration from Tata Institute of Social Sciences. He is having experience, work experience from last 12 plus years, and currently working as a Chief Marketing Officer with WW Clinics Private Limited on prevention and reversal of lifestyle diseases. So yes, over to you, sir. So I hope I am audible. आवाज येतोय ना माझा? Yes, you are audible. Hello. Okay, thank you so much. Thank you, Disha ma'am, for the warm welcome. Okay. तो देखिए आज जैसे आपने देखा होगा कि मेरा कुछ अनुभव है, उसके बाद डॉक्टर माने सर जो फाउंडर है उनका एक 35 साल का तजुर्बा है, मोनिका मैडम का अपना 7 साल का तजुर्बा है. तो हम सब एक टीम की तरह काम करें जिसमें अपना हर एक का एक योगदान है हेल्थ केयर फील्ड में. तो इस फील्ड में जब हम एंटर कर रहे हैं तो इस अनुभव को हम साथ ले आएंगे आपके भले के लिए, या आप जब इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएंगे या आप एज अ नर्सिंग करियर ऑप्शन देखना शुरू करेंगे माँ जिजाऊ GNM नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ, तो ये सारा अनुभव फिर आपको भी काम आएगा. क्योंकि क्या है, हम सब जानते हैं कि अगर हमें सफल जिंदगी चाहिए तो एक क्वालिटी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है. और माँ जिजाऊ GNM नर्सिंग इंस्टीट्यूट में हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि एज अ स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट थे तो हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके साथ एक कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी होता है, और इसके साथ साथ करियर ऑप्शंस यानी इंडस्ट्री और फील्ड ये एक दूसरे से जुड़े रहे, इसके लिए प्रैक्टिकल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है ये कितना कारीगर साबित होता है, और वो सही समय पे मिलना भी चाहिए. तो स्टूडेंट रहते अगर ये एक्सपोजर हमें मिल जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और परफॉर्म करने की जो हमारी एक लेवल है इससे ऊपर हम उठ के करियर में एक्सेल करना धीरे धीरे शुरू करते हैं. तो ये जितने भी एक्सपर्ट अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये अलग अलग फील्ड से है, और ये सारा मिक्स ब्लेंड जब साथ में माँ जिजाऊ GNM नर्सिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा तो ये स्टूडेंट वेलफेयर और इसके साथ आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ना कि आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट बट एज अ स्टूडेंट एकेडमिक प्रोफेशनल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें जरूरी होगी वो समय पे समय आपके सामने आती रहेगी. और ये जब आप जुड़ जाओगे इसका अनुभव आपको फिर पहले दिन से ही आना शुरू हो जाएगा. तो फिर से एक बार मैं आप सबका माँ जिजाऊ GNM नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और बोलने का अवसर मिला इसके लिए मैं टीम का आभारी हूँ. बैक टू द होस्ट. Yes, thank you so much, Bhushan sir. So now I would like to introduce Rajkumar Bajaj sir. So he is a first generation entrepreneur. So he's launched startups like Help and Life Sciences, Wisite Healthcare
Then he is having 15 years of experience in education and healthcare industry. So with his mentor, Dr. Rajendra Mane, he is expanding WW clinics globally. He is the executive director of Bizet Wellness Clinic. So welcome Rajkumar sir, and over to you, sir. Thank you very much, Disha ma'am. Thanks to Dr. Rajendra Mane sir, Dr. Monica ma'am, and Bhushan for giving brief about Majizao JNM Nursing Institute. So अगर कोई स्टूडेंट्स है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली रेज योर हैंड एंड वी कैन आंसर योर डाउट्स. सो जैसे डॉक्टर राजेंद्र माने सर ने बताया है कि वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी important mission, that is मिशन डिम्बा, डायबिटीज मुक्त भारत अभियान. एंड जब हम ये मिशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं सो लाइक वी आर एसोसिएटेड विद डॉक्टर्स और बहुत सारे पैरामेडिक स्टाफ जो है दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो वी आर क्रिएटिंग इकोसिस्टम जहाँ पे डॉक्टर्स है, देन पैरामेडिक स्टाफ है, देन फार्मेसी स्टूडेंट्स है. So they all can work in hand so that we can achieve mission Dimba, जिसमें prevention में भी we are working, and those who are already suffering with some lifestyle diseases, so उन्हें reverse करने में भी पूरा टीम जो है वो help कर रहा है. So कुछ doubts या questions अगर आपके होंगे तो you can definitely share in the chat box also, so we can answer. तो जैसे आप सभी को पता है GNM ये जो कोर्स है दिस इज फॉर 3 years. सो इंस्टीट्यूट इज एट धायरी और इसमें जो आपके फीस है, सो फीस में मेनली जो आपका एकेडमिक जो भी हम कवर कर रहे हैं उसमें जो फीस है दैट कंपोनेंट इज देयर. देन डेवलपमेंटल फीस है, और जो आपको यूनिफॉर्म जो भी आपको बुक्स और कुछ चीजें जो है प्रैक्टिकल के लिए जो आपको लगने वाली है, सो दैट कॉस्ट इज देयर. सो अगर आप देखेंगे पूरा, अगर एक साल की अगर आप कॉस्ट देखेंगे सो इट इज 95,000 रुपीज. और जो भी शेड्यूल कास्ट है सो उनके लिए इवन जो ओबीसी कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट्स है, सो आप सभी के लिए गुड न्यूज है. एज आवर इंस्टीट्यूट इज like affiliated to Maharashtra government, so we have a sponsorship for you which is directly coming to you from government of Maharashtra. So wo benefits आप definitely you can get if you take admission to Majizao GNM Nursing Institute. And along with that समाज कल्याण के भी कुछ scholarship जो है वो आप बच्चों के लिए है, so we are applying for that also. So you can get benefits from government scholarships if you join this program. और yes, so कुछ बच्चों का सवाल है related to fees. So definitely you can get this wonderful program. And एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा यूनिवर्सिटी. सो अगर आप महाराष्ट्र से अगर आप GNM कोर्स को एडमिशन लेते सो इट कम्स अंडर महाराष्ट्र बोर्ड. जो MSBT है उसके अंडर ये प्रोग्राम है. सो वी हैव ऑलरेडी गॉट like we are registered under them, so you can even find our application number, and even on the Maharashtra government portal also you will get a reference of Majizao GNM Nursing Institute. So it's a approved program of Maharashtra government. Any other question? So this is not a private program, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न होता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी है जो GNM प्राइवेट कोर्स रन करते हैं, और डेफिनेटली उसका जब आप कंप्लीट करते हो सो यू डोंट गेट दैट रिकॉग्निशन. So this program if you do with Majizao GNM Nursing Institute, we are affiliated to MSBT, so you will get all the you can say license and everything from Maharashtra government for practicing as a nurse.
So we have already started the admission process. So definitely you can connect to team. Samruddhi is already there, who is in touch with all of you. So अगर आप admission लेना चाहते हैं, you just complete the process, because we want to take only 60 students, and we are already getting, you can say, around 200 registrations already हो चुके हैं जिन्होंने interest show किया है. So आप सभी को एक प्रोसेस है जो लाइक समृद्धि आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे. तो उसमें आपको आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको देना है, और उसके बाद में देयर इज वन ऑनलाइन टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. सो वो आपको कंप्लीट करना जरूरी है. और जब ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करेंगे, सो इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जैसे मोनिका मैम ने बताया है. सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे जो आपको ऑन यू कैन से ऑन फील्ड जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो आपको चाहिए, सो आवर मैक्सिमम फोकस इज ऑन दैट. और इवन लाइक कुछ स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी हेल्थ केयर फील्ड में किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब कर रहे हैं. सो आप सभी के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एक्सटर्नल एडमिशन. देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एडमिशन. जो करिकुलम है दैट इज गोइंग टू बी देयर, जैसे एक रूटीन करिकुलम है, लेकिन डेफिनेटली इसमें हमने वो पूरी चीजें इनकॉर्पोरेट की है कि आप आपकी जॉब के साथ में भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं. सो जैसे बहुत सारे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होते हैं, सो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऐप के माध्यम से जो नॉलेज शेयरिंग है वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं. सो वी हैव अपग्रेडेड दिस कोर्स टू दैट, कि यहाँ पे आपको ऐप and with the help of you can say online platform also, you will get lot of learning opportunities. So definitely you can do it along with, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, you can definitely do it. लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल करिकुलम है वो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आपके हॉस्पिटल में आप कैसे उसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट करना है. Then जो theory है, that will be also given to you with the help of advanced platform जो आप access कर सकते हैं. But जैसे मैंने बताया कि आपको extra efforts लेने पड़ेंगे. So normal course में जैसे you can say 8 hours of work is there, जिसमें practical is almost 70%, which is 4 to 6 hours, and theory is 30%, 2 to 3 hours. So we have designed this entire curriculum in such a way that you can do it along with your you can say, जो भी आप हॉस्पिटल में वर्क करते हुए भी आप इसे कर सकते हैं. और जो स्टूडेंट है जो भी कहीं पे वर्क नहीं कर रहे, बट ड्यूरिंग दिस करिकुलम वी विल गिव दैट अपॉर्चुनिटी कि अगर आप एक साल राइट वे से अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे, सो यू कैन गेट गुड इंटर्नशिप्स इन बिग हॉस्पिटल्स विद गुड डॉक्टर्स इन क्लिनिक, जहाँ पे आप जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस है, डेफिनेटली यू कैन get connected with Samruddhi, and we will like to give you all the like जो भी आपके queries है, so we will like to give answer to all your queries. So but do it fast because only 60 admissions are there. So we want कि जो अच्छे talented जो students है उनके साथ में हम work करना चाहते हैं. एंड अगर लाइक आपके फीस रिलेटेड कुछ कंसर्न्स है, आप कुछ उसमें सपोर्ट चाहते हैं, सो डेफिनेटली वी आर देयर टू सपोर्ट यू. और अगर आप ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट या जो भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, अगर उसको आप एज अ बेनिफिशियरी आपके लिए जो भी अवेलेबल है, जो भी गवर्नमेंट फंडिंग अवेलेबल है, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट, जिससे आपका जो कॉस्ट बर्डन है वो कम हो सकता है.
सीईटी नहीं है, क्योंकि ये साल था गवर्नमेंट का एक प्लान था कि MSCET नर्सिंग जो भी नर्सिंग कोर्सेस है उसके लिए भी वो कंपलसरी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो वी डोंट हैव सीईटी, लेकिन like for qualifying for Majizau GNM Nursing Institute, we have a small test for you. It is not very tough. It is like you can do, अगर जो भी आपका 12th का जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस प्रोग्राम जो समृद्धि है, जिन्होंने आपको कनेक्ट किया है ये प्रोग्राम को, उनके साथ आप कनेक्ट में टच में रहिए। वो आपको और डिटेल बताएंगे कि जो टेस्ट है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट हाउ you can say take admission to this program. So definitely अगर आपके आई एम श्योर कि जो डिस्कशन हमने किया है लास्ट 30-35 मिनट्स, so आपके जो भी बेसिक डाउट्स थे, आपके पेरेंट्स के जो भी बेसिक डाउट्स थे, you must have got answer to that. Even if you want to meet us in person, so our head office is at Siagarh Road, opposite to Pula Deshpande Garden. So definitely you can come down there, you can meet our team, you can interact with the doctors, and you can get answer to your queries. So thank you very much. And अगर आपके कुछ doubts हैं तो we will like to end this session. Thank you Dr. Monica ma'am, thank you Bhushan sir, thank you Dr. Rajendra Mane sir for joining and sharing your vision about Majizau GNM Nursing Institute. Thank you very much.